New Delhi witnessed some high voltage action on day 5 of the National Ranking Table Tennis Championship. G. Satyan and Diya Chitle emerged champions in men's and women's singles category. With record participation of over 3,000 players, the championship underlined India's growing presence in table tennis. The fifth day of National Ranking Table Tennis Championship witnessed some exciting contests. In the men's singles category, G. Sathya clinched the title after defeating Ankur 4-1. In the women's category, Diya Chitale overpowered Sutirtha Mukherjee with a 4-0 victory to secure the trophy. On the occasion, Delhi's cabinet ministers Pravesh Verma and Manjinder Singh Sirsa felicitated the winners by presenting them with trophies. बहुत अच्छा लगा, एक हिस्टोरिकल है ये नेशनल चैम्पियनशिप जो दिल्ली में हुई। पहले तो हमें खुशी है कि दिल्ली में ऐसी चैम्पियनशिप हुई है, और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि बहुत बड़े स्तर पर 3,000 पार्टिसिपेंट्स ने, प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि खेल प्रमोशन के लिए सरकार सबसे आगे रहेगी। जो भी हमारे खिलाड़ी होंगे उनकी जो प्राइज़ मनी होगी उसको भी आज हमने देश में हाईएस्ट कर दिया है। Commonwealth Table Tennis Federation President Vivek Kohli, who had come to encourage the players, said that the standard of sports in the country is continuously rising. Meanwhile, the winning players expressed their joy, saying that tournaments like these help elevate the standard of table tennis in India. I think it's a great step. The Delhi Association is taking a leap with the 3,000 players, and they are actually given a good standard. So for the future organizers, this becomes a platform or a plateau, that this is where from you go further up. So they have given get a good standard, and I'm sure the athletes who have performed here, they have done well, and they have played on almost on the same facility which exists internationally in any international event. टेबल टेनिस एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। हम इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीतने लगे। जापान, कोरिया, चाइना जैसा देश के टक्कर देने लगे हैं। और आप यंगस्टर्स को देखिए, यहाँ पे जो अंकुर अभी काफ़ी अपकमिंग यंगस्टर है, उसके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ। बहुत खुश हूँ मैं जीता है, लेकिन मैं ये भी खुश हूँ कि ऐसे यंगस्टर्स इंडियन टेबल टेनिस को डेफिनेटली आगे पहुँचाएंगे। With record participation of nearly 3,000 players, the tournament certainly reflected India's growing strides in the game of table tennis. With Sushil Kumar, Tanvi Taneja for DD India.